And I can see full of energy. I can see that. That's yes. Do you have energy? Raise your hand if you have energy. Now with the hands, show me with your hands. Raise your hand and tell me that you have energy. That's good. That's good. Now lower your hand. That's good. So such a energetic, we can say, students we have right now. So with this energy, I'm going to ask you a very simple question. Okay, very simple question. Just raise your hand. Okay, those who wants to answer. Okay. So let me ask you very general, simple question. Okay. Today we are going to know each other. So first, before starting with the session, let me tell you, I'm Dr. Anupama Bhardwaj. Okay, your science teacher students. So now, let me ask you a very simple question. My question is, how many of you have seen shooting star? How many of you seen ever seen a shooting star? किसने अभी तक जो है वो जो हम कहते हैं ना तारा गिर रहा है टूटता तारा किसने देखा है किसने देखा है Okay, I can see one, two, three, four, five, six. Oh, there are many. You know, I think more than 10 students have seen. That's really good. Now tell me, how many of you have wished something from that shooting star? Okay, only two students, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wow. So 12 or 13. 13 students have already wished for something. That's really good. So you have seen shooting star. You wished for something from shooting star already. So now tell me, what is shooting star? कोई बता सकता है? What is shooting star? What do you understand by shooting star? Do you really think star is falling down? Yes? Do you really think star is falling down? Yes? How many of you agree with this? That stars fall down. जो तारे हैं वो नीचे गिरते हैं. Yes? How many of you agree with this? Okay, I can see one girl on third bench, the middle yellow t-shirt. She was raising her hand. Now green t-shirt वालों ने उन्हें कहा नहीं नीचे करो, है ना? So I can see that. Okay. So yes, you must think. आप सोचते होंगे that stars fall down, but it actually doesn't happen as such. Actually बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होता. स्टार जहां पर है वो वहीं पर है. Why so? स्टार्स क्या होते हैं? चलो कोई बता सकता है what is star? I want to know what is star. I don't know what is star. I want to know about the star. Who can tell me what is star? क्या होते हैं तारे? तारा क्या होता है? Just in your normal way, whatever you understood. अभी तक आपको जो पता है स्टार के बारे में tell me. Yes, yes, stand up बेटा. Yellow t-shirt girl. Yes. Yes, what is star बेटा? Your voice बेटा आवाज नहीं आ रही है तो माइक के पास आ जाओ. Then speak up. मैम सैटेलाइट. Satellite. Star is a satellite. Okay. So अच्छा चलो satellite क्या होता है? ये पता है? अच्छा मून क्या है? Moon is a satellite or not? Moon is a satellite? No, not a satellite. Okay. आपके साथ वो रेड टी शर्ट वाला बॉय जो है सेकंड बेंच बेटा कॉर्नर खड़े हो जाओ दूसरी रो में जो है हाँ यस स्टैंड अप बेटा स्टार सैटेलाइट क्या होती है मुझे भी बता दो इनमें से कौन सा आता है स्टार आता है सैटेलाइट आता है विच एवर यू नो सैटेलाइट आता है चलो बताओ फिर सैटेलाइट क्या होता है Projected worlds around the earth called satellite in physics part. Okay, so you are pretty aware of the term. That's good. Sit down. So that's really good. You know about it. That's good, beta. पहले तो हम स्टार पे आते हैं स्टार क्या होता है स्टार इज ए बर्निंग गैस गैस जो जलती जा रही है स्टार इज नथिंग इट्स अ गैस दैट इज बर्निंग कॉन्टिन्यूसली बर्निंग ठीक है तो व्हेन यू से स्टार स्टार इज ए इट्स अ बॉल गैस okay it's a ball of gas ठीक है that keeps on burning जो जलती जा रही है on its fixed point ठीक है जो एक जलती जा रही है
तो sounds but it's a बस आप ये समझ लो कोई गैस है वो जल रही है आसमान में, but it is very far away from earth, so that's why it doesn't look like a we can say fire. It's very far away from the earth. We can see only this much, or we can say very tiny portion of that star. Okay, so this is what we can say is a star. Now you told me about satellite. A object. Okay, now बेटा बड़े ध्यान से सुनना क्या होता है. If a object, okay, any object, yes, if a object, ये हमारा planet है, okay, this is a planet and it is a big planet. इसके चारों तरफ if small object is revolving, okay, a small object is revolving around the planet, it is a satellite. ठीक है, it's a satellite. So moon is revolving around earth. मून कहाँ घूम रहा है, अर्थ के चारों तरफ, एंड एज कंपेयर टू अर्थ मून इज स्मॉलर, एंड that's why it is a satellite and it's a natural satellite. It is not made by us, it's a natural. क्या है ये, नेचुरल है, ये हमने नहीं बनाई. ठीक है, अब आर्टिफिशियल भी होती है, सोचो जरा, क्या आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती है. Yes. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती है. अभी हम जो इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट है, कैसे आ रहा है, ठीक है, हम कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं. इवन जो आप टीवी देखते हो, वट एवर यू आर वॉचिंग, दैट इज थ्रू सैटेलाइट ओनली. वेदर फोरकास्ट हमें कैसे पता लगता है, आज बारिश होगी, कल बारिश होगी. हाउ कैन वी प्रिडिक्ट अबाउट 10 days, इवन मैनी डेज, थ्रू सैटेलाइट्स. अब वो जो सैटेलाइट्स होती है, दोज आर नॉट नेचुरल, दोज आर मैन मेड, वो हमने बनाई. तो वो भी हमारे अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करती हैं और अर्थ के बारे में हमें बताती हैं. जैसे कहाँ साइक्लोन आने वाला है, कहाँ पर जो है स्टॉर्म आने वाला है. So these satellites are helpful to humans. So we have only one natural satellite, that is moon. Others are artificial. We have many that are orbiting. Orbiting क्या हो गया बेटा, ऑर्बिट क्या होता है, फिक्स्ड पाथ. सर्कुलर एक फिक्स पाथ है, एक पक्का रास्ता है जिसको वो फॉलो करेंगे. सो दिस इज द ऑर्बिट. ठीक है, जिसको वो फॉलो कर रहे हैं. जैसे मून इस ऑर्बिट को फॉलो कर रहा है, इसी पे ये घूमेगा, इधर से इधर नहीं जाएगा या इधर नहीं जाएगा. इट विल मूव ओनली ऑन दिस पाथ. दिस पाथ इज ऑर्बिट. इज इट क्लियर, इज इट क्लियर what is star and what is satellite? Now it's clear. Yes. That's good, that's good. अब हमने कहा शूटिंग स्टार. आई आस्क यू अबाउट द शूटिंग स्टार एंड मेनी ऑफ यू हैव सीन शूटिंग स्टार एंड विश्ड समथिंग फ्रॉम दैट स्टार ऑलरेडी. बट इफ आई से शूटिंग स्टार इज नॉट अ स्टार, डू यू अग्री विद दिस? क्या आप अग्री करोगे? इफ आई से शूटिंग स्टार इज नॉट अ स्टार, देन व्हाट इट इज, फिर वो है क्या? इट्स नॉट अ स्टार. ओके, क्योंकि एज आई टोल्ड यू, स्टार्स आर व्हाट, दीज आर बॉल ऑफ बर्निंग गैस. तो गैस तो नीचे नहीं गिरेगी ना. और कुछ टाइम बाद यू नो जो स्टार्स हैं, जिनकी गैस जब खत्म हो जाती है तो वो खत्म हो जाते हैं, दे गेट डिसअपियर. ठीक है, अब मुझे एक और चीज बताओ, कोई ऐसा स्टार है जो हमें दिन के टाइम दिखता हो? कैन यू टेल मी अ नेम ऑफ एनी स्टार दैट वी कैन से सी ड्यूरिंग डे टाइम? यस, फर्स्ट बेंच रेड टी शर्ट बॉय. यस बेटा. The sun. The sun, yes. Sun is a star. It's a star. And you know, as I told you the definition of star, क्या होगा इसका भी? Same gas that are keep on burning. But as compared to rest of the stars, sun is pretty close to the earth. तो हम इसको ज्यादा पास से देख सकते हैं, हम इसकी जो गर्मी है उसको फील कर सकते हैं, लाइट को हम देख सकते हैं. Because as compared to rest of the stars, sun is close to the earth. और इसमें ज्यादा गैस है, that's why it's continuously burning. It's not getting disappeared. Is it clear? Yes. Okay, okay. So that's good.
नाउ कमिंग बैक टू आवर शूटिंग स्टार, क्योंकि हमारी तो अभी एक स्टोरी चल रही है शूटिंग स्टार की। अब उस शूटिंग स्टार की स्टोरी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, वांट टू शो यू। अब सब बड़े ध्यान से देखना, बिकॉज आई एम गोइंग टू प्ले अ वीडियो हियर। ठीक है, आई एम गोइंग टू प्ले अ वीडियो एंड देयर यू कम टू नो व्हाट इज शूटिंग स्टार, हाउ इट फॉर्म्स। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना बेटा। पता है इट्स अर्थ, एवरीवन नोज दैट इट्स अर्थ। Now, what is this black space? What this black space? Space. Black space is space only, है ना? This black space is space. अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जो भी दुनिया है, दैट इज स्पेस, है ना? ये वी नो दैट। अब जो अर्थ है उसको हम दिखा रहे हैं कि वो स्पेस में, जो उसके बाहर स्पेस है उसके साथ कैसे है। तो यहाँ पर हमारा स्पेस आ गया, यहाँ हमारा अर्थ आ गया, एंड हियर द लाइट ब्लू लाइन दैट यू कैन सी, दिस इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज व्हाट? थिन ब्लैंकेट। एक अर्थ के चारों तरफ एक ब्लैंकेट है, किसकी? एटमॉस्फेयर की, जिसमें गैसेस होती हैं। ठीक है, अर्थ को प्रोटेक्ट करती है बहुत तरह से। ठीक है, सो लेट्स सी हियर। हियर यू कैन अर्थ प्रिटी क्लोज। यहाँ पर ये आपको लेयर दिख रही है। अब ये एटमॉस्फेयर, दिस इज एटमॉस्फेयर दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। सो दिस इज हाउ इट मूव। अब जो स्पेस है बेटा, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे आपको टाइनी टाइनी डॉट्स दिख रहे हैं। कैन यू सी दीज डॉट्स? Yes. These are what? These are basically rocks. जो बाहर स्पेस होता है ना बेटा, उसमें कई रॉक्स जो हैं अर्थ के, इवन कई प्लैनेट्स के चारों तरफ वो भी घूम रहे हैं। दे आर ऑल्सो मूविंग, एंड दोज रॉक्स आर कॉल्ड meteorite. So I am going to show you meteorite. तो अब इसको थोड़ा क्लोजली मैं आपको दिखाती हूँ एक पर्टिकुलर। ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो दिस इज meteorite. So write down, this is floating rock in a space is called meteorite. Floating rock in a space is called meteorite. DF. ठीक है, सो दिस इज व्हाट। देखो बाकी मैंने पीछे वाले छोटे रख दिए, इसको मैंने बड़ा करके आई एम शोइंग यू। सो दिस इज meteorite। यहां से आपकी शूटिंग स्टार की जर्नी स्टार्ट हो रही है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू शूटिंग स्टार इज नॉट अ स्टार। सो फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट व्हाट इज शूटिंग स्टार देन। ठीक है, सो दिस इज द रॉक दैट इज फ्लोटिंग। ओके, नाउ इट इज फ्लोटिंग आउटसाइड द अर्थ's atmosphere. Okay, here you can see now, कई बार ऐसा होता है ये घूमते घूमते अर्थ के अंदर आने लगता है। नाउ यू कैन सी इट्स मूविंग फास्ट एंड नाउ इट विल एंटर्स अर्थ एटमॉस्फेयर। अब देखो अर्थ के जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंटर किया, क्या हुआ इसे? व्हाट हैपन? ब्लास्ट नहीं हो रहा, इट कैचेस फायर। इसको आग लग जाएगी, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का वो क्या होता है बेटा, वो इसको रेजिस्ट करता है, मतलब इसको पीछे धक्का देता है, और ये मगर आगे को आ रहा है। अब दो फोर्सेस जब एक दूसरे के अगेंस्ट टकराएंगी तो क्या होगा? एनर्जी निकलेगी। अब आप सबको पता है, सबसे पहले मुझे बताओ किस किस को पता है जो फायर थी, सबसे पहले फायर थी कहां से निकली थी? जो ह्यूमंस को फर्स्ट टाइम फायर पता लगा था कि देयर इज अ फायर, हाउ दे इन्वेंटेड दैट? यस, बताओ येलो शर्ट गर्ल। मैम जब दो रॉक एक दूसरे से टकराए मैम तब एक चिंगारी निकली थी मैम तब। हाँ, उन्होंने पत्थर ऐसे रगड़ा, देन दे फाउंड, अरे इसमें तो स्पार्क निकल रहा है, नाउ वी कैन यूज इट एज अ फायर। यस दैट्स राइट, दैट्स गुड, सिट डाउन बेटा। तो वहां पर भी क्या हुआ, दो पत्थर, ऐसा तो नहीं था ना उन्होंने इकट्ठे ऐसे को एक डायरेक्शन में किया था, नहीं, एक आगे जाएगा एक पीछे। ओके, अगर आपको जो है फायर निकालनी है तो इट विल गो अगेंस्ट ईच अदर। सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, एटमॉस्फेयर और वो जो मीटियोराइट है उसके बीच में हो रहा है। नाउ मीटियोराइट इज कमिंग विद अ ग्रेट फोर्स टुवर्ड्स द अर्थ। ठीक है, और अर्थ में तो ग्रेविटेशन फोर्स भी है, तो ऑब्वियसली इट विल कम डाउन। तो इस प्रोसेस में यहाँ पर इसको फायर लग जाएगी, और जो ये फायर वाला रॉक है इसको कहते हैं मिट्योर। राइट डाउन,
Write down enters, as meteorite enters, meteorite तो भी हमने लिखा है ना स्पेलिंग उसको, meteorite enters Earth's atmosphere, Earth's atmosphere, जैसे ही meteorite अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आता है, it catches fire, it catches fire, ठीक है, it catches fire and then it is called meteor, then it is called meteor, फिर हम उसको क्या कहते हैं, meteor। और ब्रैकेट में अब वो टर्म लिख लो जो हम स्टार्टिंग से बोलते हैं, दैट इज शूटिंग स्टार, दिस इज योर शूटिंग स्टार, जो हम शूटिंग, क्या हुआ, और चलता हुआ नजर आ रहा है, meteor, meteor is your shooting star, क्लियर बेटा, Yes, ma'am. Yes. that's good, that's good, so this is your shooting star। अब ये शूटिंग स्टार अगर अर्थ में आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या करो, अब क्या दिखेगा, कहीं ना कहीं तो गिरेगा, सो लेट्स सी हियर, इट विल फॉल समवेयर, देखो अभी नीचे आ रहा है, देखो यहाँ पर, ये अर्थ के सरफेस पे आ रहे हैं, माउंटेन्स आपको दिख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जाके अब गिरेगा। अब जो ये गिरा हुआ जो रॉक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मीटियोराइट। अब जहां पर आपने मीटियोराइट लिखा है ना, मीटियोराइट, वहां पर डी की जगह टी आ जाएगा, ठीक है, और ई लग जाएगा, मीटियोराइट हो जाता है, ठीक है। सो एक ही जो रॉक है, अलग अलग जगह पे उसके तीन नाम आ गए, जब वो स्पेस में था मीटियोराइट, जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर किया और उसको फायर लगा, so that time it was called meteor, when it strike on the surface then it is called meteorite, so this is the journey of shooting star। so आज की स्टोरी अच्छी लगी? Yes. did you learn something new? Yes. आप शूटिंग स्टार का कॉन्सेप्ट जब भी आप कभी अपने किसी के साथ बात करोगे, जूनियर्स के साथ या कोई ऐसा जिसको नहीं पता हो कि शूटिंग स्टार इज नॉट ए स्टार, सो यू कैन टेल इट्स अ रॉक दैट इज बर्निंग, okay, and that rock is coming from the space only, is it clear? Yes. So this makes our science very interesting, इससे हमारी साइंस का कितना अच्छा जो हमें कॉन्सेप्ट पता लगता है। अब मैं इसके साथ आपको एक और स्टोरी पे लेके चल रही हूँ, आई एम गोइंग टू टेक यू सम वन अनदर स्टोरी। So let me introduce, this is Shivani, okay, this girl is Shivani and she just woke up, वो भी उठी है, ठीक है, and from her room's window she is looking outside, so what can you see, what she is watching right now? Birds, flowers, trees, sun, है ना, so उसको ये सब दिख रहा है, but how can she see from this window? उसे कैसे इस विंडो से सब दिख रहा है, how can she see everything from this window? Can you see me from this glass? Yes. How and why? Tell me. Now one student, raise your hand. I will call. Now raise your hand, then I will ask. Okay. I can see only hand. I think first bench, first row girl. Yes, I can only see the hand, beta. Now tell me. Yes, beta. Beta, your voice is not audible. Speak it again. Yes. Because it's transparent. It's transparent, so you can easily see me. Yes. And that's why Shivani can see. Yes. Yes. That's right. That's right.
So now, sit down, beta. That's really good. So now let's move ahead. Now this Shivani, now here you can see what she is doing right now. Who can tell me what she's doing? Where she is right now? Okay, say third bench girl, green t-shirt. Stand up, beta. Yes. Washroom. She is in washroom, and what she did? She's She closed the door. She closed the door, and what she is assuming now? That no one can see her. Yes. Yes. Why? Why she is thinking like this? Now no one can see her. Why so? because the door is of wood. Of wood. So wood is what? Wood is what? What is it? Is opaque. Means she cannot see through this wood door. It's opaque. Is it clear? Yes. So can you give me one more example of opaque material? My wall. Wow, that's good. That's good. Sit down, beta. Sit down. That's one example. That is sufficient. Now let's move to the next. Okay. Okay. So now what she is doing? Brushing Brushing her hair. Okay. Now tell me, is this mirror is opaque, transparent, or what? Now here I have this mirror. You can see me. Yes. So is it opaque or transparent? Is it opaque or transparent? Why? I'm able to see myself. How it is opaque? Is yes. Now one student stand up and tell me why it is opaque, not transparent. Yes. I can see first bench boy. Yes. Come forward and tell me why it is opaque, not transparent. मैं इसके बाहर नहीं दिखता क्योंकि यस इसमें आप मुझे देख पाते हो देख सकते हो लेकिन हियर द स्क्रीन हमारी ब्लॉक हो गई हमें पीछे नहीं दिख रहा कि क्या लिखा हुआ है ना तो हमें इसके आर पार नहीं दिख रहा वी कैन नॉट सी थ्रू इट सो दैट्स व्हाई इट्स opaque that's good sit down beta that's really good it's a opaque that's right अब हम एक और ले लेते हैं एग्जांपल तो अब हमें पता लग गया opaque क्या होता है ट्रांसपेरेंट क्या होता है क्या इसके बीच का भी कुछ होता है now she is somewhere translucent. Yes. Now here you can see Shivani is going with her father somewhere. And because of raining, here you can see window is now not pretty clear. It's blurred. So she is thinking that now why she is not able to see clearly through this window and what this thing is called now. translucent. Now here in my hand you can see. You can figure out that I'm doing something here. Yes? On the back side. Can you guess this? I'm doing something. But can you tell me what exactly this object is? Can you tell me? No, no. You can make the guess, but you're not pretty clear what is here. Okay? So you can partially see through it. आपको दिख रहा है लेकिन पूरा नहीं दिख रहा. So what it is called? Translucent object. Translucent. It is called translucent. So yes, so we learned about three things through Shivani's story. क्या थी स्टोरीज में हमें एक ओपेक एक ट्रांसपेरेंट और एक हमें ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट दिखा यस अब हम एक और चीज करेंगे ठीक है अब हम एक यस समवन रेज्ड देयर हैंड ओके सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग ओके और एक्सपेरिमेंटली बिकॉज वी आर लर्निंग व्हाई साइंस क्यों साइंस में हमें why, how, what पढ़ना जरूरी है. Your first chapter is about this only. More the curious we are, more we get the result.
जितना हम ये पूछेंगे क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, we get the result. So science is all about this, कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है. ठीक है, चलो. So let's begin our next thing here. ठीक है, just give me a minute. We are going to do very simple experiment. ठीक है, and you are going to help me out because I don't know. Okay, can you tell me what is this? Aware of this. This is balloon. Now, who can tell me what is matter? Who can tell me what is matter? I want to know about the matter. Who can tell me what is matter? You already learned in your previous classes, beta. What is matter? Just give me a definition. Okay? Who can tell me? Raise your hand. Who can tell me what is matter? I can see one hand is raising from first bench. Yes, beta, आ जाओ. I think the same student. Yes. आ जाओ, जाओ, फटाफट आओ, फटाफट. So we can start with the experiment. Yes. What is matter? मैम लोहा. Okay. Loha. Loha is matter. Okay. Can you define matter now? Now define the matter. Ma'am, you are not audible. Hello. Am I audible now? Yes. Okay. So only one student will speak at a time. ठीक है? बाकी सब चुप. Pin drop silent. चलो फर्स्ट जो बेटा है, चलो बेटा बताओ अपना नाम. What's your name? बेटा loud. समनप्रीत सिंह. Samarpreet Singh. Okay. Samarpreet, now tell me. You said Loha is a metal. Okay. That comes under metal category. Okay, no doubt. Can you define what is metal? Why you say that Loha is a metal, iron is a metal? That's in that mega tools. So many things made from many things. Like here you can see fans are made up of aluminium, plastic. Walls are made up of bricks. Even human body is made up of muscles, bones. So everything is made up of something. But why you consider iron now? Who can tell me about the matter? You already learned about the matter, beta. Very simple definition is of matter. Matter क्या होता है? Very simple. Okay, I'll tell you. Sit down, beta. Samar, sit down. Now, everyone, please listen carefully. Don't make noise. Otherwise, you will not able to understand what I am going to say. Voice will echo. If you will speak and I will speak, no one is going to understand. So make it understandable. Okay. So listen carefully. So now here is matter is what? Anything. Note down. Anything that occupies space and have mass. कोई भी चीज जो जगह घेरती है और उसका वजन होता है, that is a matter. So we human are also matter because we occupy space and we have matter mass also. ठीक है? Now my question is air around us. Okay, air is everywhere and around us. Is it a matter? Yes. Okay, how can you say that matter? Air is a matter. Okay. Yes, but now one student who knows, just come forward. Okay? Yes, beta. Tell.
बेटा रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट प्लीज बी क्वाइट, लेट अस स्पीक. ठीक है, अब वो सामने आई है उसको बोलने दो. यस बेटा बोलो. Air has also weight. Speak loudly and clearly so that everyone can understand. Yes, speak up beta. Air has also weight. It has also weight. So in this balloon, if I inflate it, okay, let me inflate it. So what do you think? Now it is having air. So air is occupying space or not? Yes. Occupied space. उसने जगह घेर ली balloon की. Or does it have weight now? It has mass. Yes or no? अब इस balloon का कुछ वजन होगा या नहीं होगा? Yes. So that's why we can say air is. ये देखो मैंने निकाल दी तब इसमें से हवा चली गई. So yes, air has mass and occupies space. So it's a matter. Okay, sit down. Sit down, beta. So now, one more thing that I'm going to show you. What is this? Can anyone tell me what is this? Have you seen this somewhere? Okay, I'll tell you. It's a magnet. It's simple magnet. चुंबक जिसको हम कहते हैं, ठीक है? It's a magnet. So we are going to see, ठीक है? मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाली हूँ. यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें रखूंगी, ठीक है? So let's see ये मैग्नेट किस किस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. So firstly it's a candle. So let's see, will it attract this candle? It's not attracting this. So now let me bring something that can attract this. So I have this point. So let's see, will it attract this point? No. Safety pin. I have this safety pin. Let's see, will it attract this? Yes. So here you can see it is attracted. Here you can see it's attracted. So it is attracted towards this magnet. So I have one iron nail also. So I'll show you with the iron nail also. So this is the iron nail I have right now. So let's see, will it get attracted? So can you see? Yes. It is attracted with this magnet. Okay? So let's take one more example. I have this ball. So this ball will attract? No, it's not. So it means magnet attracts whom? Magnet किसको attract करता है? Iron को, क्रोमियम को, और हमारे पास एक और होता है निकल. तो ये तीन चीजें जो है मैग्नेट को अट्रैक्ट करती है. मैग्नेट उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है. लेकिन अगर हम प्लास्टिक ले लेंगे, अगर हम वैक्स ले रहे हैं और वी आर टेकिंग प्लास्टिक, इट विल नॉट गेट अट्रैक्टेड. ठीक है? So this is how magnet behaves. So we should know about this. अब हम एक चीज देखते हैं, very simple that I'm going to show you right now. So इसको ये जरा ध्यान से देखना बेटा. Everyone look carefully. So I'm going to show you. Here you can see. Can you see these two glasses? Yes. So let's see. I'm putting some things. Okay. So we'll see will it float or sink. So these are the thermocol balls. What do you think? It will float or sink? Let's check it out. Oh, it's really floating. That's right. So you all are right. So these are floating. So I'm going to put this pen, this safety pin in this. Will it float or sink? What do you think? So let's see. Oh, it sinks. That's right. Now I have this balloon. Will it float or sink? Yes, it's floating. Now I have this plastic ball. Will it float or sink? Yes, it's floating. Now this point will float or sink?
Oh, yes, it's sinking. Okay. So, rest, what can I add in that? Okay, eraser. You all have eraser now. So, I have this eraser. Will it float or sink? It's floating. It's light. Okay. So, now what can I add? So, I have iron nail. Will it float or sink? Yes, it sinks. Now, can you tell me why some substances are sink or some are floating? They have no weight. They have light weight. Ma'am, these things have light weight. Okay, who said just raise your hand? Raise your hand. Who wants to tell why some objects are floating and some are sinking? Why? Okay, I want to know from last bench. Boy, beta, aa jao. Red t-shirt. Yes, your hand is raised. Come forward and tell me. Ma'am, it is lightweight. Oh, those who are floating or those who are sinking? Which one? Ma'am, those were floating. Yes. So those who are floating are lighter in weight. That's right. And what about the other case? They are heavier. उनका क्या है जो floating है, वो heavier है या lighter है? Ma'am, heavy. Heavy. That's right. That's right. So that is all about the science. We did some experiments. है ना? So now with this, students, we are going to meet in next class. Sit down, beta. And in a few minutes, your math class is going to start. Okay? So bye, students. Bye. Bye. Bye.